And now it is time for sweet. So we are going to bake a very tasty cake. First we need 300 gram dry fruits, and dry fruits you can take as per your choice and as per your taste. कुरागा बहुत टेस्टी होता है यार ये भी कुरागा. तो टोटल हमने लिया 300 ग्राम. Wash your dry fruits very good, and the dry fruits what you are going to use, if they are little bit hard, then soak them into water for 30-40 minutes. So yeah, for this no need to treat with water. Now we need 4 medium size quinoa, which is also called malta, and we need to wash very good because we are going to use shell also, and 3 we will use right now and 1 we will use later. जूस निकालना है इसका. Now clean shells from inside, because if it will be stay there it can give a little bitter taste. So clean shells. Now cut into small pieces. Now put on flame to boil. 2 tablespoons sugar. और ये जो छिलके हैं इनको भी इसमें पीसेस करके ऐड कर देंगे, और इसको चलाते रहिए थोड़ा सा कि ताकि शुगर जो है वो मिक्स हो जाए और ये नीचे थोड़ा सा लगे भी नहीं. Let it boil for 30-40 minutes. One egg, sugar 2 tablespoons, cinnamon powder half teaspoon, honey बहुत ही बढ़िया गुड क्वालिटी का 2 tablespoons, $150 gram butter. Add the boiled juice and shells. First इसमें ऐड करेंगे ये ड्राई फ्रूट्स. One teaspoon walnut 50 gram. Now we will add soft cottage cheese 150 gram, or you can add chena also. ओवन स्टार्ट कर लीजिए 180 डिग्रीज पर. ऑल पर्पस फ्लोर इसमें ऐड करेंगे. बेकिंग पेपर इसको शिफ्ट करेंगे इसमें. Oven 1 часов, да? 1. Да.
अब इसे अब पहले थोड़ा सा ठंडा होना देते हैं और इसके इस तरह से पेपर तो इस पर से निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसका सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। नाउ वी विल यूज दैट 1 किलो and 70 ग्राम बटर। इसमें ये जूस बटर में मिक्स कर दिया। शुगर डस्ट, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक जैसी हमें चाहिए। Now put it in the fridge for 3-4 hours. Не совсем, не сказать, что прям притму. Ну, вкусно. Да. И Not too much sweet and tasty. чернослив, курага. Stollen. German Christmas cake. Do try this German dried fruit cake. Hope you will like it, and please hit the like. And if you haven't subscribed our channel yet, please do subscribe. Take care, stay safe, stay healthy. Dasvidanya.